Okay, good afternoon everyone. Good afternoon students. कैसे हैं सब लोग यहाँ पे? Good afternoon, good afternoon, good afternoon one and all. तो guys, hello Kaushik. How are you? Good afternoon, Kaushik. So welcome to Topper Study, your one-stop solution for all your JEE preparation, guys. Good afternoon, everyone. Good afternoon. तो चलो यार शुरू करेंगे आज के सेशन. तो यार आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में. Okay, so in the previous class we have discussed about indefinite integration. If you have missed those lectures, guys, don't worry. आपको videos मिल जाएगा. In the playlist you can find all the videos of those particular chapter. Okay, तो यार आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में. ओके, नाउ इन डेफिनेट इंटीग्रेशन स्पेसिफिकली द टुडेस टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. हम ये वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हम कवर करेंगे 1 to 6 प्रॉपर्टीज. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस सेशन. सो गुड आफ्टरनून कार्तिक, गुड आफ्टरनून कौशिक, हाउ आर यू? How is everyone doing? कैसे हैं? I hope you're fine. So excited for today's session? Excited for today's session, everyone? I hope everyone is excited for today's session. तो चलो यार हम शुरू करेंगे आज के session in a very detailed way. Okay, so let us begin the session today, everyone. So let me start discussing the topic which is going to be definite integration. तो यार डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले हम क्या करेंगे, आई गिव यू अ वेरी शॉर्ट इंट्रो अबाउट माई सेल्फ. ओके, सो गाइज दिस इज गौतम. I'll be your mathematics faculty. I have done my graduation from NIT Surat. I've been teaching from past 4 years. I have taught thousands of students in offline as well as online guys. So good afternoon Priya, how are you? How are you Priya? Good afternoon. I hope you're audible. So chalo, everyone ready? Shall we begin the today's session? I hope everyone is ready. तो चलो यार शुरू करेंगे आज के सेशन. तो गाइस, as I told you, आज हम डिस्कस करेंगे यार डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में इन ए वेरी डिटेल वे. ओके, तो यार डेफिनेट इंटीग्रल एक बड़ा सा चैप्टर है, राइट? वी हैव मेनी कॉन्सेप्ट्स इन डेफिनेट इंटीग्रल्स. लाइक यार वहाँ इसमें हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है. वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक, राइट? वी ऑल्सो हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें properties of in which the functions are going to be periodic functions. Definite integral जिसमें inequalities involved हैं. We have the concept of Leibniz rule. We also have the concept of definite integral as a limit of the sum. तो यार मतलब बहुत से टॉपिक्स है. वी हैव मेनी टॉपिक्स इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट? सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट गाइस, ये पूरे के सारे टॉपिक्स को हम एक ही क्लास में कवर नहीं करेंगे. ओके, विल डू दिस इन 3 क्लासेस. तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हम फर्स्ट 6 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, रिवाइज कर लेते हैं एंड ऑल्सो विल डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट. ओके ओके प्रिया एंड कौशिक, आई होप इट्स क्लियर फॉर यू. तो चलो यार स्टार्ट करेंगे आज के सेशन एंड दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेट इंटीग्रल्स. ओके, सो फर्स्ट द डेफिनेशन, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एवरीवन. तो यार अगर आप इंटीग्रेशन a to b f of x into dx निकालेंगे गाइस, whatever result you are going to get, वो रिजल्ट होगा capital F of B minus capital F of A. This is what you are going to get everyone, which is capital F of B minus capital F of A. वो होगा integration a to b f of x into dx का result. Okay, so to understand in a very simple way, एक simple सा question लेते हैं, which is going to be integration. Let us say आपके पास I is equal to इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स. आपको ये वाला निकालना है गाइस. तो यार आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है. फर्स्ट लेट मी डू इट इन दिस वे. हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स है ना. तो पहला आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट यू फाइंड आउट द इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन. सो बेसिकली अगर आपके पास इंटीग्रेशन a to b f of x into dx, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पूछेगा
तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। ओके, हाय रोशन, गुड आफ्टरनून रोशन, गुड आफ्टरनून। तो चलो यार, अगर आप पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आप इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स निकालेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप। सो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन नॉर्मल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स निकालेंगे, गाइस आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एंड दैट इज गोइंग टू बी माइनस कॉस एक्स। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सो वंस यू गॉट द रिजल्ट, वंस आपको एक रिजल्ट मिल गया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का, तो गाइस सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, यू अप्लाई द लिमिट्स टू द रिजल्ट विच यू गॉट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिला था यहाँ पे, तो अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करो रिजल्ट विच इज गोइंग टू बी द लिमिट इंटीग्रेशन ए टू बी। ओके, सो द रिजल्ट विच यू आर गोइंग टू गेट इन दिस केस, यार यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। दैट इज इन प्लेस ऑफ एक्स यू टेक द अपर लिमिट, in place of x you take the lower limit, so in that way आपको f of b minus f of a मिलेगा। so basically आप यहाँ पे भी वही करेंगे ना, तो यहाँ पे सेकेंड वाले स्टेप में what are you going to do everyone, you're going to apply the same concept, right? तो basically आप क्या करेंगे, यहाँ पे minus cos x है ना, तो minus cos x के लिए आप अप्लाई करो the lower limit is 0, upper limit pi by 2। तो इसका सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा गाइस, you're going to get minus of cos pi by 2। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, minus of cos pi by 2 minus of cos 0, this is what you're going to get। okay, so now you tell me, इससे आपको सोल्यूशन मतलब what is going to be the answer you are going to get from here। so आपको यहाँ पे मिल जाएगा minus of cos pi by 2 minus of cos 0। तो यार cos pi by 2 का वैल्यू तो 0 है, cos 0 का वैल्यू तो 1 होगा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस मिलेगा। तो बेसिकली आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे एंड दैट इज गोइंग टू बी 1। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन आउट देयर। ओके, सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, whenever you find a definite integral, this is how you have to deal with it। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट जो भी फंक्शन दे दिया उसका इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालो। ओके, फाइंड आउट द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एंड जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो वाले रिजल्ट को आप अप्लाई करो लिमिट a टू b विच इज गोइंग टू बी कैपिटल f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ a। तो यार वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज क्लियर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर। ओके, तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यार ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा डेफिनेट इंटीग्रल्स का। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन अ डिटेल वे। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप डायग्राम देखेंगे गाइस, डायग्राम में देखो, कैन यू सी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, दिख रहा है ना यहाँ पे सभी को, यार ये होगा ग्राफ ऑफ द फंक्शन y is equal to f of x। y is equal to f of x का ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, between the limit x is equal to a to x is equal to b। अगर आप इंटीग्रेशन a to b f of x into dx, if you're basically finding it out, गाइस इसका मीनिंग क्या होगा ज्योमेट्रिकली की, ये कर्व के नीचे आपको जो भी एरिया मिलेगा ना, जो भी एरिया मिलेगा between x equal to a to x is equal to b and x axis, if you find that region, if you find the area of that particular region, यार इसका जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू इंटीग्रेशन a to b f of x into dx बेसिकली वही वैल्यू इंडिकेट करेगा। सो व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग इंटीग्रेशन a to b f of x into dx, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होगा कि अब वो जो भी कर्व दिया है उसके नीचे जो भी आपको एरिया मिलेगा इन द लिमिट x इक्वल टू a to x इक्वल टू b, व्हाटएवर एरिया यू सी दिस एरिया, यहाँ पे अगर आप ये वाले एरिया का वैल्यू निकालेंगे, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी इंडिकेटेड बाय this one which is integration a to b f of x into dx। तो यार ये होगा geometrical meaning of which one, geometrical meaning of definite integration everyone। okay, तो यार I hope this point is clear for all the students यहाँ पे। so यहाँ से let me tell you one more important point which is related to the definite integration only guys। so everyone आप लोग देखो यहाँ पे, let us say this is the horizontal line जो x axis को indicate करेगा।
Let me draw a graph of a certain function. Let us say graph of कोई function कुछ ऐसे दिख रहा है आपको यहाँ पे. Let us say the graph of a function is going to be something like this. Okay. So let us say यार यहाँ पे ये graph होगा y is equal to f of x का. Between the limit x is equal to a to x is equal to b. Between x equal to a to x is equal to b. Let us say this is what you're going to get. The graph is going to look something like this. तो यार अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन a टू b f of x इंटू dx निकालेंगे, अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन a टू b f of x इंटू dx निकालेंगे, what is the result going to be? Let us say यार ये होगा a1, ये एरिया होगा a2, ये रीजन ऑफ द एरिया होगा a3. दिस रीजन एरिया इज गोइंग टू बी इंडिकेटेड बाय a4. तो अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन a टू b f of x इंटू dx निकालेंगे गाइस, this is simply going to indicate the value. and यार वो value क्या होगा? वो value होगा a1 minus a2 plus a3 minus a4. This is what you are going to get, everyone. So basically यहाँ से आपको एक important point you have to remember that यार definite integral में क्या होगा कि जो भी region होगा ना x axis के नीचे, उसका एरिया आप नेगेटिव ले लो. जो भी रीजन होगा ना एक्स एक्सिस के अबव, ओके, दैट इज गोइंग टू बी टेकन एज ए पॉजिटिव एरिया. दैट इज हाउ द डेफिनेट इंटीग्रल इज गोइंग टू वर्क लाइक. अगर आप इंटीग्रेशन a टू b f of x into dx निकालेंगे ना यहाँ पे, तो ये वाले जो भी ऑपरेटर है, ये वाले जो भी ऑपरेशन है, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस इज बेसिकली गोइंग टू फाइंड द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर वे ओनली. वो क्या करेगा वहां पे? वो फाइंड करेगा a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4, जिसमें जो भी रीजन एक्स एक्सिस के अबव है, it is going to take it as a positive region, and जो भी region x axis के below है, it is going to take it as a negative area. Okay, so I hope this is clear for all the students out there. So this is one important point which you have to remember, which is related to definite integration, everyone. Okay, so good afternoon Arifa, good afternoon. I hope you're fine. तो चलो यार सुन लो यहाँ पे. Now let us go to another topic. In fact एक क्वेश्चन कर लेते हैं based upon this basic concept of definite integration, and then we'll talk about definite integration by substitution method. तो guys चलो यार ये वाले क्वेश्चन देखो. How do we do this question? यार सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये दे दिया यहाँ पे I is equal to integration 0 to pi e raised to x into sin x into dx दे दिया. तो यहाँ पे हमें I का वैल्यू निकालना है. तो यार इसका दो मेथड्स है. एक मेथड क्या होगा, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लो. फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, e raised to ax into sin bx into dx इंटीग्रेशन a to b का फॉर्मूला है, which we have discussed guys. Remember that integration e raised to ax integration e raised to ax into sin bx into dx का we do have a formula. I told you in the previous class. Let us say सर याद नहीं है, आप बता दो. अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो वहां पे in that case how do we do this question? Guys, I'll tell you a very simple method. If you don't know the formula also, you can still apply integration by parts in this particular case. No, तो integration by parts अप्लाई करो. तो यार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करने के लिए आपको इलेट रूल यूज करना पड़ेगा. आपको डिसाइड करना है ना which is the function u, which is the function going to be v. मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा है. अगर आपको याद है इंटीग्रेशन u into v, it's going to be u into इंटीग्रेशन v माइनस होल इंटीग्रल u डैश इंटू इंटीग्रेशन v होगा. तो इसमें तो आपको डिसाइड करना है ना u कौन सा होगा, v कौन सा होगा. इसके लिए we have a rule which is called as elate rule. So according to that guys, आप देखो यहाँ पे e raised to x is exponential, तो यार ये होगा फंक्शन v and sin x is going to become u. So let us apply the formula. So according to this formula आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा e raised to x sin x u into इंटीग्रेशन v है ना यहाँ पे guys, that is going to be इंटीग्रेशन e raised to x. यार आपको e raised to x ही मिलेगा in the limit 0 to pi minus whole integral 0 to pi. Okay, and guys one more important thing, यहाँ पे आपको u डैश निकालना है. तो यार sin x का डिफरेंशिएशन बता दो आप लोग, cos x मिल जाएगा इनटू इंटीग्रेशन v. तो इंटीग्रेशन e raised to x आपको मिल जाएगा e raised to x into dx. So this is what you are going to get, everyone.
I hope the things are clear for you. Everyone यहाँ पे Arifa, Raushan, Priya and Kaushik, I hope this is clear for you till this particular point. Okay. Now यहाँ से हम क्या करेंगे guys? Simple सा logic है. अभी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म को आप लिमिट्स अप्लाई कर लो यार. अगर आप x इक्वल टू पाई लेते हैं साइन पाई तो जीरो होगा, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, माइनस इफ यू अप्लाई द लोअर लिमिट अगेन x इक्वल टू जीरो, यार साइन जीरो का वैल्यू तो जीरो होगा, सो जीरो माइनस जीरो, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. एंड फॉर द सेकेंड टर्म अब क्या करेंगे, अगेन यू नीड टू अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें ये वाला फंक्शन होगा v, ये वाला फंक्शन होगा u अकॉर्डिंग टू द इलेट रूल. तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ यू आर गोइंग टू गेट माइनस ऑफ इंटीग्रेशन u इंटू इंटीग्रेशन v, सो दैट इज cos x इंटू integration e raised to x in the limit 0 to pi minus of whole integral 0 to pi. Again it's going to be u dash cos x का integration, sorry cos x का differentiation minus sin x होगा. तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस आपको मिलेगा प्लस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x, it is going to be e raised to x into dx. This is what you're going to get. Okay, now let me do the simplification यहाँ पे guys. तो देखो क्या मिलेगा आपको, I is equal to माइनस ऑफ, यार अगर आप अप्लाई करेंगे लिमिट्स को यहाँ पे आपको cos पाई विच इज माइनस वन, तो यार आपको माइनस ऑफ ई रेस टू पाई मिलेगा, माइनस ऑफ cos जीरो इज वन, ई रेस टू जीरो इज वन, तो यहाँ पे आपको वन मिलेगा. सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू पाई e raised to x into sin x into dx. So this is what you're going to get everyone. तो यहाँ से यार आप देख लो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस ये तो प्लस होगा, तो ये आपको मिलेगा e raised to pi प्लस वन, और ये होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू पाई e raised to x into sin x into dx. This is what you're going to get. तो गाइज अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो टू पाई e raised to x into sin x into dx is basically I. तो अगर आपने इसको I ले लिया, इट्स बेसिकली I ओनली. नो अगेन डोंट अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हियर. मतलब क्या होगा, साइन कॉस में चेंज होगा एंड देन अगेन कॉस टू साइन, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन दैट वे. तो बेसिकली आप क्या करेंगे यहाँ पे गाइज, एवरीवन यू आर गोइंग टू टेक दिस एज I बिकॉज दैट इज द इनिशियल इक्वेशन, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी I. So if you take this to left hand side, यार आपको 2i मिलेगा जो होगा e raised to pi plus 1. हमें तो i का वैल्यू निकालना था, तो यहां से i का वैल्यू आपको क्या मिलेगा यार, i का वैल्यू आपको मिल जाएगा e raised to pi plus 1 by 2. This is going to be the solution everyone. So I hope this question is clear for everyone out there. So this is how you have to do the questions guys. तो कभी भी अगर आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल गया जिसमें आपको डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आपको अप्लाई करना है, दिस इज हाउ यू नीड टू अप्लाई. एक बार काम करेंगे, आई जस्ट राइट डाउन ए नोट फॉर यू सो दैट आपको भी कभी भी याद होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज्ड इन अप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन ए डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉब्लम. सो एवरीवन लुक एट हियर, अगर कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन ए टू बी यू इंटू वी इंटू डी एक्स आपके पास ये वाले ऐसे टाइप ऑफ इंटीग्रल मिल गया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यू अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन दिस वे गाइस. कैसे करेंगे, आपको मिलेगा पहला टर्म u इंटू इंटीग्रेशन v, इसका जो भी रिजल्ट मिलेगा ना u इंटू इंटीग्रेशन v का, यू अप्लाई द लिमिट टू द एंटायर रिजल्ट माइनस होल इंटीग्रल, यार इसको आप लिमिट अप्लाई करो विच इज गोइंग टू बी a टू b एंड दिस इज गोइंग टू बी u डैश इंटू इंटीग्रेशन v इंटू dx. सो दिस इज हाउ you need to apply everyone. This is how you need to apply what? The integration by parts formula to a definite integral sum. I hope this is clear for all the students. Anyone is having any more doubt? Let me know in the chat box. Everyone understood this question? I hope this question is clear for you guys. Okay. So with this basic question, I hope that आपको समझ में आ गया यार डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना है. यार अभी हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स में पहले वाला मेथड जो होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो यार मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपके लिए नया मेथड नहीं है, राइट. आई मीन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, यू वेर देयर, यू हैव सीन दैट वीडियो. आपको पता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, तो यार इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको डाउट हो सकता है कि सर
कुछ यहाँ पे डिफरेंट मेथड है क्या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन? वेल लेट मी टेल यू, इट्स द सेम मेथड। इंडेफिनेट में हमने जो भी मेथड अप्लाई किया है, यहाँ पे भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। I'll tell you what that change is going to be. Let me take a question, एक example लेते हैं, okay? Through that, let me first tell you what is that going to be. वो change क्या होगा indefinite and definite वाले method of substitution method, okay? So let us take this question everyone. आप लोग ये वाला question देखो, इसमें हमें दे दिया integration 0 to 1 by root 2 sin inverse x into dx by 1 minus x square into under root of 1 minus x square is given for you. तो हमें निकालना है यार ये वाले इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, वो evaluate this integral. So what you can do in this question is that क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया मिल सकता है कि यार इसमें हम ले लेते हैं sin inverse x is equal to t. So if you take sin inverse x is equal to t, okay, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, क्या मिलेगा आपको 1 by अंडर रूट ऑफ 1 minus x square into dx. यार आपको मिल जाएगा ये dt. Let me apply this modification to the above question. तो basically above question क्या होगा, I is equal to integration. तो यार sin inverse x के प्लेस में आपने ले लिया t, dx by under root of 1 minus x square, well that is going to be dt whole divided by, यार ये 1 minus x square क्या होगा आपको कैसा पता चलेगा? So basically आपको x t के टर्म्स में लिखना है। तो यार ये वाले इक्वेशन से, अब देखो ये वाले इक्वेशन से हमें पता है कि x is going to be sin t. So take x is equal to sin t everyone. देखो क्या मिलेगा आपको, यार आपको मिल जाएगा 1 minus sin square t. Okay, so from here I'm going to get I is equal to integration t into dt divided by, यार ये 1 minus sin square t क्या मिलेगा आपको? I think that is going to be cos square t. So 1 by cos square t आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, ये होगा secant square t into dt. Now you might see here कि मैंने अभी तक इंटीग्रल्स का जो भी लिमिट है आई हैव नॉट रिटन इट डाउन. यस और नो एवरीवन? हमने लोअर लिमिट नहीं लिखा है यहाँ पे, हमने अपर लिमिट भी नहीं लिखा यहाँ पे. सो यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इट शुड बी. सो शुड वी राइट 0 to 1 by root 2? शुड वी राइट द सेम लिमिट्स? वेल यहाँ पे चेंज होगा, and that is what is going to be the difference in a definite integral sum and indefinite integral sum. यहाँ तक तो सेम है, definite integral and indefinite integration में, method of substitution में, it's going to be the same till this. Okay, the only thing which you have to keep in your mind is यार ये जो भी लिमिट्स है ना यहाँ पे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट इज गोइंग टू चेंज. सो हाउ इज इट गोइंग टू चेंज? क्यों चेंज करना है यहाँ पे? सिंपल सा लॉजिक है इसके लिए भी. अब देखो ये जो भी पुराना लिमिट्स है ना 0 to 1 by root 2, ये जो भी लिमिट्स है दिस आर विद रेस्पेक्ट टू x. अभी हमें जो भी लिमिट्स लिखना है we need to change it with respect to the new variable which is going to be t. तो कैसे लिखेंगे वो न्यू लिमिट्स, आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू वेरिएबल t? वेरी वेरी सिंपल गाइस. यहाँ पे आप क्या करो, ये वाले इक्वेशन में से व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0, अब देखो t का वैल्यू क्या होगा. x इक्वल टू 0 के लिए t इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0. तो यार लोअर लिमिट आपको मिल गया 0. पर x इक्वल टू 1 by root 2, यार t का वैल्यू क्या होगा? साइन इनवर्स 1 by root 2, वेल दैट इज गोइंग टू बी पाई. क्या होगा? साइन इनवर्स 1 by root 2, that is going to be pi by 4. So यहाँ पे 0, यहाँ पे lower limit and upper limit is going to be pi by 4. This is what you're going to get. Now you can apply this integration by parts. यहाँ पे integration by parts ही अप्लाई करेंगे ना आप ये definite integral solve करने के लिए. So apply the integration by parts to this one and get the solution. So rest of the part I'm going to leave it for you. आप लोग कर लेना. Already हमने discuss किया था ना ये वाले question से कैसे अप्लाई करना है integration by parts to definite integral sum. So using the same technique आप यहाँ पे ये वाले equation को अप्लाई करो and you are going to get the answer. So guys, again I'm telling you, so method of substitution में, to basically sum it up, there are two important points which you have to keep in your mind. Okay, when you apply the method of substitution, the first thing here, आपको जो भी whatever the variable you are taking, like we have taken t is equal to sin inverse x, you have to make sure that वो जो भी new variable है, it should be continuous in the limits
which are given in the question. So for example, यहाँ पे देख सकते हैं, I've taken t is equal to sin inverse x, and sin inverse x is continuous. Sin inverse x is definitely going to be continuous in the interval 0 to 1 by root 2. Okay, so I hope that point is clear for you कि आप जो भी substitution में, in the substitution, whatever term, whatever variable you are taking, the new variable should be continuous in the given limits. सेकेंड पॉइंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द न्यू वेरिएबल यू हैव टेकन, आपको वहां पे लिमिट को भी चेंज करना अकॉर्डिंगली, लाइक वी हैव डन इन दिस केस. देखो यार, पहला 0 to 1 by root 2 था लिमिट्स, अभी न्यू वेरिएबल के हिसाब से हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 के पास t का वैल्यू 0 मिला है, x इक्वल टू 1 by root 2 के पास t का वैल्यू हमें मिला है pi by 4. So according to that we have changed the limits of the integral. So from that you're going to get the solution. So this is going to be the concept of method of substitution, everyone. Okay, so now let me go to another concept, and यार ये होगा properties of definite integrals के बारे में. Okay, hello Vaishnavi, good afternoon. Hello Lab Madrid, good afternoon everyone. So चलो यार, अभी आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो. Now before I start discussing this concept of definite integrals, I want everyone, the properties of definite integrals, I want everyone to understand the importance of this. यार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज ए टोल्ड यू, ये वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरी एग्जामिनेशन में. ओके, एंड ऑल्सो आउट ऑफ दैट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल्स, I can definitely tell you that यार 60 to 70% चांसेस होगा वो प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होगा. वो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, 60 to 70% चांसेस आर देयर फ्रॉम दिस चैप्टर दैट वो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर ही आ सकता है. So that is how much, that is the importance of this particular topic, the properties of definite integral, everyone. So that is why I'm telling you, everyone concentrate यहाँ पे. Today हम 6 properties को revise करेंगे in a detailed way. I'll also show you few questions in which you can see कैसे apply करेंगे ये वाले properties को and how to get the solution, everyone. So with that, let us begin the first property, guys. तो पहला वाला property क्या है यहाँ पे, the first property of definite integral, या first property तो simple है, अगर lower limit upper limit same हो गया, then in that case आपको जो भी value मिलेगा definite integral का, यार वो होगा simply 0. Okay, again I'm telling you, अगर lower limit एंड अपर लिमिट सेम हो गया इंटीग्रल का, इन दैट केस जो भी आपको वैल्यू मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल का, दैट इज सिंपली गोइंग टू बी 0. फॉर एग्जांपल, ए सिंपल एग्जांपल फॉर दैट, लेट अस से इंटीग्रेशन 1 to 1 x into dx इज गिवन. इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली आप बता सकते हैं ये आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा. सो दैट इज योर फर्स्ट बेसिक वाला प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर यू इज दैट इंटीग्रेशन a to b f of x into dx निकालो, या इंटीग्रेशन a to b f of t into dt निकालो, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा. सो व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी टेलिंग यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यार फॉर्मूला सभी को याद रहेगा, but try to understand what these properties are basically telling you. Okay, second property is basically telling you that अगर आप वेरिएबल को चेंज करेंगे from x to t or t to x or from one variable to another variable without changing the limits of the integral, again I'm telling you, अगर आप वेरिएबल चेंज करेंगे without changing the limits of the integral, तो in that case the value of the definite integral is going to remain the same. वो affected नहीं होगा, वो वेरिएबल चेंज होने से वो वैल्यू सेम रहेगा वहां पे. So for example, I'll give you a very simple example. No, अब देखो यार, इंटीग्रेशन 0 to 1 x into dx आपने निकाला है. ओके, आई मीन वी नीड टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ दिस. तो क्या होगा यार, x into dx का रिजल्ट हमें पता है, x स्क्वायर बाई 2 होगा. अभी आप अप्लाई करो लिमिट 0 to 1 के बीच में, आपको मिलेगा यार 1/2 minus 0/2 एंड द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी 1/2. सिंपल. अगर आप x के प्लेस में लेट अस से रिप्लेसिंग इट बाय द वेरिएबल t, कुछ फर्क पड़ेगा? Is it going to make any difference in that case? देखो, x के प्लेस में आपने t ले लिया, तो dx के प्लेस में आपने बेसिकली dt ले लिया. तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालेंगे यार, आपको मिलेगा t स्क्वायर बाई 2 इन द लिमिट 0 to 1. एंड यहाँ पे अगर आपने लिमिट अप्लाई कर लिया, यू आर गोइंग टू गेट अगेन 1/2 minus 0/2.
जिसका solution 1/2 ही होगा. So that is what I'm telling you. So according to the property number 2, you can always change one variable to another variable from x to t to x, or from one variable to any other variable without changing the limits of the integral. Without changing the limits of the integral, अगर आप one variable to another variable change कर सकते हैं, you can do that. In that case, the value of the integral is going to remain the same. वो effect नहीं होगा वहां पे. So that is going to be the property of the definite integral, which is going to be the second property. Now let me start discussing the third property, guys. यार third property में क्या होगा कि अगर आप इंटरचेंज करेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट से, इफ यू इंटरचेंज द अपर लिमिट टू लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इन दैट केस यार जो भी रिजल्ट होगा ना, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द -1. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द third wala property. So you can do that. You can definitely interchange upper limit to lower limit to upper limit. But the only thing you have to keep in your mind is when you're interchanging the upper and lower limit, guys, multiply करो वो जो भी result आपको मिलेगा with the -1. Okay, so this is going to be the third property, guys, third property of definite integral. So again I'm telling you, first property क्या बोल रहा था, अगर अपर एंड लोअर लिमिट सेम होगा यार, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा 0. अगर आपको let us say that you are keeping the limits of that integral same and you're changing the variable, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे. okay, if you're changing the variable, everyone, okay, and if you're basically keeping the integrals, the limits of the integrals is the same, तो वहां पे क्या होगा, जो भी आपको वैल्यू मिलेगा, the value is going to remain the same. Like you see here, integration a to b f of x into dx निकालो, या integration a to b f of t into dt निकालो. आपने यहाँ पे क्या किया है कि लिमिट्स आपने सेम रखा है, and if you change the variable, it doesn't matter, the value is definitely going to remain the same. So I hope the part 2, the second integral, the second property of definite integrals is clear for you. And then you have the third property of definite integral. जिसमें what is the third property telling you, guys? Very simple. अगर आप integration a to b f of x into dx में if you interchange the limits, मतलब lower limit to upper limit and upper to lower, so in that case आपको जो भी result मिलेगा ना, you basically multiply it with the -1. so that you end up getting the result. मतलब यहाँ पे whatever result you have to get, you have to multiply it with -1. So that is going to be the property number 3. Okay, so I hope this is clear for everyone, guys. Sir, daily classes कितने बजे होते हैं? Guys, let me tell you यार, ये जो भी classes हैं, ये होगा 3 o'clock एक class होगा और 9 o'clock एक class होगा. If you want to attend the Hindi classes, especially English classes, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स होगा यहाँ पे लैंग्वेज. ओके, तो ये वाले क्लासेस होगा 3 बजे क्लास होगा एंड 9 o'clock एक क्लास चलेगा. ओके, एंड इफ यू वांट टू अटेंड ओनली इंग्लिश क्लासेस, लेट अस से प्योर इंग्लिश क्लासेस, यार एक क्लास होगा 12 o'clock एंड दूसरा क्लास होगा 6 o'clock. ओके, एंड टॉपिक सेम रहेगा. 12 o'clock एंड 3 o'clock का जो भी सेशन से टॉपिक सेम रहेगा, लैंग्वेज डिफरेंट होगा. वहां पे 12 o'clock सेशन पे इंग्लिश रहेगा, 3 o'clock के सेशन में इट्स गोइंग टू बी इंग्लिश. ओके, एंड 6 o'clock अगेन यू विल हैव इंग्लिश एंड 9 o'clock होगा इंग्लिश वाले सेशन. ओके, सो दिस आर गोइंग टू बी द टाइमिंग्स एवरीवन. सो 2 कोर्सेज चल रहा है अभी. तो these are courses for your revision. Okay, revision of your JEE examination, guys. JEE main examination है ना फरवरी में, तो इसके लिए हमने revision start किया है. Already it's been more than 1 week, everyone, and there's a very tremendous response from many of the students. Okay, so आप लोग भी join कर लेना, whichever course you want to join. 2 courses है, एक होगा JEE Achievers जिसमें सिर्फ इंग्लिश होगा, एंड एक होगा जीत की जंग जिसमें हम इंग्लिश यूज करेंगे. सो whichever course, whichever language which you are comfortable with, you can basically join that course. Okay, so anyway, let us do a question based upon these 3 properties, everyone. तो यार आप लोग ये वाले क्वेश्चन देखो. If f of x is a function satisfying f of 1 by x plus x square into f of x equal to 0 for all non-zero values of x, then आपको evaluate करना है the value of
इंटीग्रेशन साइन थीटा टू कोसेकेंट थीटा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यार इसका वैल्यू क्या होगा हमें निकालना है। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बेसिकली आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, let me take the function given, let me take I is equal to the integration sin theta से लेके cosecant theta, okay, and it's given f of x dx. So this is what is given for you. Now if you want to find the value of I, I'll tell you a very simple logic for that, guys. तो बेसिकली आप क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो भी फंक्शन है ना, यहाँ पे ये कंडीशन दिया है ना यहाँ पे, तो यार इससे आपको f of x क्या मिलेगा? कैन आई से f of x is going to be minus 1 by x square into f of 1 by x. Can we say this is what you are going to get, everyone? Yes, definitely true. तो यार आप क्या करेंगे यहाँ पे I is equal to इंटीग्रेशन साइन थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा से लेके कोसेकेंट थीटा, और f ऑफ x के प्लेस में आप क्या करेंगे, आप ये वाले टर्म ले लो, minus 1 by x square f of 1 by x into dx. Okay, now when you see this integral you should be getting one idea. आपको तो definitely एक method तो याद रहेगा यहाँ पे, याद आएगा यहाँ पे, which is going to be method of substitution. अब यहाँ पे अगर आप 1 by x is equal to t लेते हैं guys, क्या मिलेगा आपको? minus 1 by x square into dx आपको मिल जाएगा dt. And if you apply this modification to this integral, यार क्या मिलेगा आपको यहाँ से? यार आपको मिल जाएगा I is equal to इंटीग्रेशन, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने 1 by x equal to t ले लिया, तो यार ये होगा f of t, then minus 1 by x square dx क्या हो गया, यार वो तो हो गया dt, तो आपको f of t into dt मिल जाएगा यहाँ पे. And I told you method of substitution, definite integrals में what you need to do, you also have to change the limits of the integral according to the new variable. So when x is sin theta, t क्या होगा 1 by sin theta, तो यार t होगा cosecant theta, the lower limit. When x is cosecant theta, t क्या होगा 1 by cosecant theta, and that is going to be sin theta, which is going to be the अपर लिमिट एवरीवन. तो यार हमें इसका वैल्यू निकालना है अभी यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट मी अप्लाई द प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 3 मतलब वो इंटरचेंजिंग वाला प्रॉपर्टी. सो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा कोसेकेंट थीटा टू साइन थीटा को, मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन थीटा टू कोसेकेंट थीटा, sin theta to cosecant theta. Let me just interchange the upper and lower limit. So when I interchange the upper and lower limit, I did mention, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, you need to multiply it with -1, and यहाँ पे f of t into dt, this would remain the same. Now यहाँ पे guys, what am I going to do is, let me apply the property number 2. यार property number 2 कुछ ऐसा था that without changing the limits sin theta to cosecant theta, we can always change the variable of the function, right? तो ये t है, let me change this variable to x. तो क्या फर्क पड़ेगा, वहां पे वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना. So let me write it as f of x into dx in this way. Now this is simply nothing but, observe करो, integration sin theta to cosecant theta f of x into dx is simply nothing but I. So basically this is what you're going to get, everyone. तो यहाँ से this is what you're going to get. I'm getting I is equal to minus I, or else we can write it as 2I is equal to 0. तो यहाँ से आपको I का value मिलेगा, which is simply going to be 0. So this is the solution, everyone, for this particular question. तो यहाँ पे अगर आपको evaluate करना है integration sin theta to cosecant theta f of x into dx, जिसमें वो जो भी फंक्शन है, if it is going to satisfy this condition, then the value of the integral is simply going to be 0. तो यहाँ पे हमने कौन से प्रॉपर्टीज यूज किया है, हमने यूज किया है प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टी नंबर 3. So with that, I hope this question is clear for everyone. यार अभी हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 के पास. यार प्रॉपर्टी नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 पे ज्यादा स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन भी रहता है एंड ऑल्सो मिसकंसेप्शन भी ज्यादा होता है ये वाले प्रॉपर्टी में. सो आई क्लियर एवरीथिंग इन ए वेरी डिटेल वे. तो सब लोग ये प्रॉपर्टी नंबर 4
बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा? तो प्रॉपर्टी नंबर 4, लाइक इफ यू सी द स्टेटमेंट, नो, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को आप इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, जिसमें सी क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द कंडीशन सी? वेल, सी शुड लाई बिटवीन ए एंड बी. दिस इज द कंडीशन सी शुड सेटिस्फाई, कि आपको सी का जो भी वैल्यू पिकअप करना है, इट शुड लाई इन द इंटरवल ए टू बी. सो इन दिस वे, ये जो भी एक इंटरवल है ये फंक्शन का, अपने दो इंटरवल्स में स्प्लिट करके यू आर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन. ओके, बट शुड वी डू दिस फॉर एवरी क्वेश्चन? मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 2 x into dx है. So should I write it as integration 0 to 1 x into dx plus 1 to 2 x into dx and do it in this way? और else मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 to 2 x into dx. Can I do it directly? Well, everyone try to understand. ये वाले सिनेरियो में there is no need for you to apply the property number 4. ये वाले सिनेरियो में इंटीग्रेशन 0 to 2 x into dx को there is no use of writing it as 0 to 1 x into dx plus 1 to 2 x into dx. अगर आप ये वैल्यू भी निकालेंगे और else आप ये वैल्यू भी निकालेंगे, it's basically going to indicate the same thing. Okay, so what you need to understand is, यार ये प्रॉपर्टी हम कहाँ पे अप्लाई करना है? तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा. तो अगर हम ये वाले प्रॉपर्टी हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, तो कौन से वाले क्वेश्चंस में कहाँ पे एग्जैक्टली हमें अप्लाई करना है? I'll give you an example for that. यार आप ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो, इंटीग्रेशन I is equal to इंटीग्रेशन -1 to 1 mod x into dx ले लो. You take this type of questions everyone. यार ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में where in the given interval फंक्शन एक ही वे में बिहेव नहीं करेगा, it's going to behave in multiple ways. मतलब आप देखो यहाँ पे ये mod x जो भी है ना, अगर आप ग्राफ देखेंगे mod x का, the graph of mod x is going to be something like this, right? जो -1 to 1 के बीच में, you see, this is how the graph is going to be. Let us say ये -1 होगा, ये x equal to 1 होगा. So let us say this is going to be x equal to -1. यार ये x equal to 1 होगा और ये होगा x is equal to 0. अब देखो ना यहाँ पे what is basically happening in this particular case everyone? यार between -1 to 0 function is behaving according to the equation y equal to -x, and between 0 to 1 function is behaving according to the equation y equal to x. तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है इंटीग्रेशन -1 to 1 mod x into dx, यार डेफिनेटली आपको ये जो भी इंटरवल दिया है ना -1 to 1, आपको डेफिनेटली इसको दो इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है. दो इंटरवल्स में आपको ब्रेक करना ही करना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो भी फंक्शन है इट इज बिहेविंग इन दैट वे. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि -1 to 0 के बीच में it is behaving according to the equation y equal to -6. तो यहाँ पे you take -x into dx. Between 0 to 1, you see what is happening. It is behaving according to the equation y equal to x. अब यहाँ पे लेते हैं y के प्लेस में x into dx. So in this way you are going to get the solution everyone. So in such type of questions where in a given interval अगर function मल्टीपल वेज में डिफरेंट मल्टीपल वेज में अगर बिहेव करेगा, so in that case this property is going to be useful for you. Like you can take an example of this. Between -1 to 1 -1 to 0 के बीच में it was behaving according to y equal to -x. Between 0 to 1 it is behaving according to y is equal to x. So in that way हमने क्या किया, ये पूरा -1 to 1 के इंटरवल को -1 to 0 0 to 1 में हमने ब्रेक कर लिया, and according to how it is behaving in that certain intervals we have taken the function and then we are going to do the integration. But as I told you यार ऐसे वाले केसेस में इंटीग्रेशन 0 to 2 x into dx वाले केस में there is no need of applying the property number 4. It's stupid to apply the property number 4, क्योंकि देखो यार इसमें क्या होगा कि बेसिकली अगर आप ड्रॉ करेंगे y is equal to x, you see between 0 से लेके 2 के बीच में, between 0 to 2 के बीच में what is basically happening? See x equal to 0 x equal to 2 के बीच में the function is behaving only in one way.
right? It's only behaving according to the equation y is equal to x only. So why do you want to split that into two intervals and make it more complicated? Just directly find the value of this integral. No, it's going to give you the same answer anyway. So this is the importance, everyone, the importance of the property number 4. Yeah, property number 4 के ऊपर there are good number of questions asked in previous year examination. So that is why I'm explaining you in a very detailed way यहाँ पे कि property number 4 कहाँ पे अप्लाई करना है एंड कहाँ पे अप्लाई नहीं करना है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ओके, सो अगेन लास्ट टाइम एवरीवन यू से इट अलोंग विथ मी. प्रॉपर्टी नंबर 4 कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा? वेरेवर इन ए गिवन इंटरवल अगर फंक्शन मल्टीपल वेज में बिहेव करेगा, अगर फंक्शन मल्टीपल वेज में बिहेव करेगा, सो अकॉर्डिंग टू दैट इंटरवल यू टेक द फंक्शन. ओके, एंड अगर फंक्शन मल्टीपल वेज में नहीं बिहेव करेगा, इफ इट इज गोइंग टू बिहेव ओनली इन अ सिंगल वे इन द गिवन इंटरवल, तो वहां पे there is no use of property number 4. Okay, hello Bhushan, good afternoon. Glitch in the camera, यार कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, सो यू नो फॉर टाइम बीइंग यार इग्नोर करो इसको. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास में फिक्स कर लेता हूँ जो भी टेक्निकल इश्यू है, मैं फिक्स कर लेता हूँ कैमरा को. बट अभी तो यार कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपको. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर यू. Okay, now anyway, let us do a quick question based on this question. I mean based on this concept of property number 4. There property number 4 mein if you see, evaluate integration 0 to 2 x square into step x into dx is given, where the step x is going to represent the greatest integer function. तो कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे एवरीवन? हाउ शुड वी डू द क्वेश्चन? वेरी 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 सिंपल. यहाँ पे क्या करेंगे, पहला मैं ले लेता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 x स्क्वायर इंटू स्टेप x इंटू dx. Now everyone try to understand this question. यार स्टेप x 0 to 2 के बीच में it's not going to behave in a single way. Piecewise function है, greatest integer function. तो 0 to 2 के बीच में it's not going to behave in a single way. क्या होगा यहाँ पे कि देखो 0 to 1 के बीच में if you take any value of x where 1 is going to be excluded, यार step x का value क्या होगा? 0, right? Any value of x between 0 to 1, यार step x का value होगा 0. So using the same thing, आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा x square into 0 into dx. This is what you're going to get. Plus integration, अभी देखो 1 to 2 के बीच में अगर आपने कोई भी वैल्यू ऑफ x ले लिया, अगर आपने कोई भी वैल्यू ऑफ x ले लिया 1 to 2 के बीच में, तो वहां पे स्टेप x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? यार स्टेप x का वैल्यू आपको मिल जाएगा वहां पे 1. So in between any value you take between 1 to 2, x any value between 1 to 2, step x is going to be 1. So basically आपको मिलेगा x square into 1 into dx. So now all you have to do is solve this integral. First यार वो तो कैसे भी 0 होगा. Second वाले integration होगा 1 to 2 x square into dx. इसका solution होगा x cube by 3 in the limit 1 to 2. When you apply the limits guys, if you take x equal to 2 cube 8 by 3 होगा और ये होगा minus 1 by 3. तो यहाँ से आपको solution मिलेगा 7 by 3 and that is going to be the answer. So in this case again, कौन से प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया? We did apply the property number 4. हमें पता है step x 0 to 2 के बीच में multiple ways में behave करेगा. So according to that we have taken the interval 0 to 1 के बीच में step x का value 0 है, 1 to 2 के बीच में step x का value 1 है. So according to that we got the solution. So I hope the property number 4 is clear for all the students. Okay, so now let me go to another property. यार ये property number 5 होगा. सर अनिर्बन सर कब लाइव करेंगे? हो जाएगा, जल्दी ही आ जाएंगे अनिर्बन सर भी. इनफैक्ट अभी भावेश सर है गाइस, यू नो फिजिक्स का. इफ यू हैव एनी फिजिक्स रिलेटेड डाउट्स और एनी फिजिक्स कॉन्सेप्ट आपका क्लैरिफाइड नहीं है, यू कैन अटेंड द भावेश सर लेक्चर्स. यू नो दे आर गोइंग टू बी, मतलब इन after my session I think Bhavesh sir session is going to start, so do join that sessions guys. Okay, anyway let us get back to this particular concept now. तो यार अभी ये वाला प्रॉपर्टी होगा प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 इज अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी जिसमें क्या होगा कि अगर आप ये वाले दिस टाइप ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स अगर आप लेते हैं लाइक इंटीग्रेशन 0 to a f of x into dx, अगर आप यहाँ पे
इफ यू रिप्लेस x बाई a माइनस एक्स एवरीवन, अगर आप x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, गाइस लेट मी टेल यू, द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल will remain unaffected. If you replace x by a minus x also, guys, in this type of definite integral, you're going to get the same value. Okay. हेलो आकाश, गुड आफ्टरनून आकाश, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून. सो चलो अभी यहाँ पे सुन लो. सो आई थिंक आई एम डिस्कसिंग द प्रॉपर्टी नंबर 5. सो लिसन टू दिस एवरीवन. सो यहाँ पे लेट मी टेक ए क्वेश्चन फॉर यू टू शो द एप्लीकेशन पार्ट फॉर यू. सो evaluate integration 0 to pi by 2 sin raised to nx by cos raised to nx plus sin raised to nx into dx. ओके, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे कि I is equal to integration 0 to pi by 2 sin raised to nx divided by cos raised to nx plus sin raised to nx into dx. तो यार यहाँ पे you can apply the property number which one, property number 5, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, I is equal to integration 0 to pi by 2. So according to the property number 5, अगर आप x को पाई माइनस मतलब यहाँ पे x को a माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल विल रिमेन द सेम, राइट. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा, यार ये तो cos थीटा हो जाएगा. सो cos रेज टू nx, cos तो साइन में चेंज होगा, तो ये साइन रेज टू nx होगा. ये साइन है, ये cos में चेंज होगा, तो आपको cos रेज टू nx मिल जाएगा. तो गाइस लेट अस डू वन थिंग, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. लेट मी टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2. अभी ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करो यहाँ पे, ऐड द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इन दिस केस एवरीवन, यार आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2. गाइस देखो यार डिनोमिनेटर तो सेम है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, साइन रेज टू nx प्लस cos रेज टू nx. अब डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा sin रेज टू nx प्लस cos रेज टू nx. एंड इफ यू कैन क्लियरली सी ये दो टर्म कैंसिल हो जाएगा आपको. सो आपको 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 इंटू dx मिलेगा. और यहां से i का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, i का वैल्यू आपको मिल जाएगा पाई divided by 4. So this is the solution you are going to get everyone. So I hope this question is clear for you. तो यार आप ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, we have applied the property number 5, जिसमें what we have done, all you have to do is replace x by a minus x. So that is what we have done, right? क्वेश्चन में हमने x को पाई बाई 2 माइनस एक्स में चेंज किया है, रिप्लेस किया है. This is the integral which we got, and then we added these two equations, and finally you got a very simple answer. तो यार ये properties का यही यूज है कि properties of definite integral अप्लाई करने से क्या होगा, you're going to get the questions very easily and within a very lesser time. Okay, so that is the importance of properties. So that is why ये वाला topic examination point of view में very very important है. ओके चलो. सो भूषण सर, भावेश सर का टाइमिंग्स क्या है, यार भावेश सर का क्लास शुरू होगा 4 बजे, 4 o'clock, you know, his class is going to start. Okay, you can join that class, भावेश, सॉरी भूषण यहाँ पे. ओके एंड आपको टाइमिंग्स मिल जाएगा भूषण. एक काम करो, यू कैन सी द टेलीग्राम राइट इन द चैट बॉक्स, यू कैन सी दैट टेलीग्राम, ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप. जस्ट क्लिक ऑन दैट, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को. वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएगा. व्हेनेवर आवर क्लासेस आर गोइंग टू गो लाइव, you get all the updates in that telegram channel. And if you have not subscribed, subscribe karo, notifications turn on karo, so that whenever any teacher is going to go live, aapko notification mil jayega and directly right away you can join the session. Okay, chalo, so cool. Let us go to another concept now. तो यार अभी हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टी नंबर 6. तो प्रॉपर्टी नंबर 6 इज एन एक्सटेंशन of property number 5. तो property number 5 में हमने जो भी topic, you see this particular property we have seen, right? Integration 0 to a f of x into dx, हम लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x into dx. तो property number 6 में भी it's going to be the same thing. That is, in place of x you can replace it by a plus b minus x
the result is going to be the same. वहां पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा. आप x को a plus b minus x के रिप्लेस कर सकते हैं. You're going to get the same answer. So you can say property number 6 is a slight extension of property number 5. So for example, you see this question, everyone. Evaluate integration 2 to 3 under root of 5 minus x divided by root x plus under root of 5 minus x into dx. If you want to find out the value of this integral, तो guys आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? See, we can do it in this way. I is equal to integration 2 to 3 integration 2 to 3 under root of 5 minus x divided by root x plus under root of 5 minus x into dx. तो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 6, यहाँ पे x को आप रिप्लेस करो a प्लस बी माइनस एक्स से. सो आप रिप्लेस करो 3 प्लस 2 माइनस एक्स से. सो रिप्लेस x बाई 5 माइनस एक्स everyone. So what am I going to get here everyone? तो बेसिकली आपको मिलेगा I is equal to इंटीग्रेशन 2 to 3. तो 5 माइनस एक्स के प्लेस में आप x ले लो, तो यार आपको मिलेगा रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स के प्लेस में आप क्या करेंगे? 5 माइनस एक्स रिप्लेस करो तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस अगेन यहाँ पे 5 माइनस एक्स के प्लेस में रिप्लेस इट बाई एक्स. सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एवरीवन. तो यार ये इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा. आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी नंबर 6 यू गॉट द इक्वेशन नंबर 2. add both the equations, add the equation number 1 and equation number 2. देखो यार क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? आपको मिलेगा 2i is equal to integration 2 to 3. डिनोमिनेटर में you have root x plus under root of 5 minus x. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर लो डायरेक्टली. इट इज गोइंग टू बी रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स इंटू dx. तो आप लोग बता दो what is going to be the answer everyone. यहाँ से just see the question and tell me what answer you are going to get after this. Hi Gina, good afternoon. Yeah, you can ask the doubt. Guys, free feel to ask the doubt. अब डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं in the chat box. Any doubt you have, you can definitely ask me in the chat box. Okay, free feel for that. Okay, so now you see this. तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? यार ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से आपको 2i मिल जाएगा, वैल्यू टू बी 1. तो यहाँ से i का वैल्यू आपको मिलेगा 1/2. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So I hope this is clear for everyone, guys. Anyone is having any more doubt? I hope this question is clear for you. So whenever you want to do this question, मतलब ऐसे type of questions में you can apply the property number 6 and directly you are going to get the solution. So I hope this question is clear for everyone out there. Okay, so now let us do another question. तो यार अब ये वाले question dependent होगा. Okay, which is going to be dependent on all the properties we have discussed enough. तो अभी हमने 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस किया है. सो लेट अस सी ये वाले क्वेश्चन में विच प्रॉपर्टी कैन वी अप्लाई एंड हाउ टू डू द सिंप्लीफिकेशन. तो यार आप लोग ये वाले क्वेश्चन देखो. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/4 log of 1 plus tan theta into d theta, what is that going to be equivalent to? So आप लिख सकते हैं I is equal to integration 0 to π/4 log of 1 plus tan theta into d theta. अब सोचो यहाँ पे and tell me which property can we apply in this case? Everyone out there, कौन से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? सोचो 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 एवरीवन. which property can we apply in this particular case? Can we go with the property number 5, जिसमें आप क्या करना पड़ेगा? थीटा को आप π/4 माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, दैट इज x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे ना प्रॉपर्टी नंबर 5 में. अब वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो अप्लाइंग दैट प्रॉपर्टी यार क्या मिलेगा आपको? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4. यार ये होगा log ऑफ 1 प्लस tan थीटा के प्लेस में आप रिप्लेस करेंगे 45 माइनस थीटा से, दैट इज π/4 minus theta into d theta. This is what you're going to get. Now let me do the simplification everyone. देखो यार क्या मिलेगा आपको यहाँ से? यार आपको मिल जाएगा I is equal to integration 0 to π/4 log of 1 plus tan 45 minus theta. You can apply tan of a minus b, no? तो यार tan of a minus b, tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. तो tan π/4 1
minus tan theta divided by 1 plus tan A into tan B, that is 1 plus tan theta. This is what you're going to get. तो यहाँ से I का वैल्यू मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 log ऑफ, सो न्यूमरेटर वंस यू टेक द एलसीएम आपको 2 मिलेगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan थीटा मिलेगा इनटू d थीटा. सो गाइस यू कैन अप्लाई द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, log ऑफ a बाई b log a माइनस log b होगा ना. तो यहाँ से I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 यार आपको मिलेगा log 2 इंटू डी थीटा, log 2 बेस ई इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एवरीवन. अगर आप देखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा, गाइस दिस इज सिंपली नथिंग बट आई, जिसका वैल्यू हमें निकालना है. सब क्या करेंगे, ये वाले टर्म के प्लेस में आई ले लो, यू टेक दैट टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 log 2 बेस e इंटू डी थीटा. तो यहां से आप लोग आंसर बता दो, i का वैल्यू होगा पाई बाई 8 इंटू log 2 बेस e. This is the solution you are going to get everyone. So I hope this question is clear for all the students. So if you see the options everyone, यार option C होगा right answer in this particular case. So हमने यहाँ पे कौन से प्रॉपर्टी यूज करके we got the solution, property number 5, जिसमें हमने क्या किया, थीटा को पाई बाई 4 माइनस थीटा से रिप्लेस कर लिया, and then we have used when we have simplified, and then we got the solution. So I hope this question here is clear for all the students. Okay, now let us do a previous year question. यार देखो ये जेई में 2021 में पूछा था, यही साल पूछा था जेई में 2021 में, a question which is basically dependent on the concept of definite integral. So everyone ready? Shall we start doing this question? I hope everyone is ready. चलो शुरू कर लेते हैं. First try to analyze the question everyone. तो p of x दे दिया, a quadratic polynomial with real coefficients such that this is the condition given for you. Okay, and the p of x is going to leave a remainder 5 when it is divided by x minus 2. Then the value of 9 into b plus c, what is this going to be equivalent to? So guys, question देखने के लिए it looks complicated, it looks lengthy, but let me tell you यार इतना complicated नहीं है. It's a easy question once you understand the concept what we need to do in this case. Okay, तो पहला यार अब देखो question में क्या दिया है, p of x दे दिया. So let me write down p of x जो कि x square plus bx plus c होगा, right? And another thing given for you in the question is integration 0 to 1 p of x into dx का वैल्यू दे दिया जो 1 होगा, right? Let me put p of x as x square plus bx plus c in this equation and see what am I going to get. I'll get integration 0 to 1. यार p of x के प्लेस में आपको मिलेगा x square plus bx plus c into dx, okay, and that is equal to 1. You see what value you are going to get on the right hand side. So integration of x square तो x cube by 3 होगा, bx का इंटीग्रेशन bx square by 2 होगा, and ये होगा cx, and apply the limit between 0 to 1 and this is equal to 1. So when you put x is equal to 1, the upper limit आपको मिलेगा 1 by 3 plus b by 2 plus c and that is equal to 1. Lower limit कैसे भी 0 होगा ना, if you put x equal to 0 in this particular term, it's anyway going to be 0. So from here आपको b by 2 plus c का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 minus 1 by 3 which is going to be 2 by 3. तो guys यहाँ से अब देखो यार b plus 2c का वैल्यू you are getting it as 4 by 3. So let us say ये होगा आपका equation number 1. There is also another condition given for you in the question कि p of x is going to leave a remainder 5 when it is divided by x minus 2. Can we use the remainder theorem? सभी को याद है ना remainder theorem? I think maybe in your grade 9th or grade 10th you did learn the remainder theorem, right? So use that. क्या मिलेगा आपको? So when you divide p of x by x minus 2, the remainder is 5. So
दिस सिंपली मीन्स अगर आप p ऑफ 5 का वैल्यू निकालेंगे और लेट अस से p ऑफ 2 का वैल्यू, सॉरी बिकॉज you're डिवाइडिंग इट बाय x minus 2, नो, सो अगर आप p ऑफ 2 का वैल्यू निकालेंगे, the result is simply going to be 5. This is the meaning of this statement everyone, that p of x अगर रिमाइंडर 5 मिलेगा when it is divided by x minus 2, that means p of 2 का वैल्यू 5 होगा. So let me put x equal to 2 in this equation. So p of 2 is going to be 2 square 4 plus 2b plus c and that is going to be 5. तो guys यहाँ से 2b plus c का वैल्यू आपको 1 मिलेगा. Let me take it as equation number 2 everyone. ओके, now आप लोग बता दीजिए ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके b एंड c का वैल्यूज क्या मिलेगा? एनीवन आउट देयर? सो b प्लस 2c you are getting it as 4 by 3, right? And what is the value of 2b plus c? यार 2b plus c का वैल्यू यहाँ पे है which is going to be 1, right? So from here if you multiply, let us say 2 से multiply करेंगे, यार आपको 4b plus 2c is equal to 2 मिलेगा and ये होगा b plus 2c is equal to 4 by 3. Okay, so when you take the, let me solve these two equations, तो यार यहाँ पे minus 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 b minus 4b, यार minus 3b मिलेगा आपको. 4 by 3 minus 2, यहाँ से 2 3s are 6, 4 minus 6 minus 2 by 3, तो यहाँ से आपको b का वैल्यू मिलेगा 2 by 9. So for b equal to 2 by 9, can you tell me what is the value of c going to be? Well, from this equation, अब देखो यार c is equal to 1 minus 4 by 9 होगा and you are going to get the value of c as 5 by 9. So this is going to be the value. So therefore, we can say b is going to be 2 by 9. C is going to be 5 by 9. तो क्वेश्चन में हमें कौन सा वैल्यू निकालना है? 9 into b plus c. तो therefore 9 into b plus c का वैल्यू क्या होगा? 9 into 2 plus 5, 7 by 9. The value which you're going to get is simply going to be 7. तो बेसिकली क्या आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे guys? Well, if you see the options, well, option 3 is going to be the right answer. That is 7 is going to be the right answer in this case. तो समझ में आ गया सभी को ये वाले question? Anyone is having any more doubt in this question? So first यहाँ पे we have used a very simple logic. First हमने definite integral concept use करके we got the value, we got the first condition which is going to be b plus 2c is equal to 4 by 3. Then we have taken the second condition also, जो p of x का रिमाइंडर 5 होगा when divided by 2. So p of 2 is equal to 5. तो ये वाले condition use करके हमें ये वाले equation मिला है guys. Okay, so from these two equations what we can do is that, अब देख सकते हैं guys everyone यहाँ पे कि हमें b का value मिला है, right everyone? We did get the value of b, which is going to be 2 by 9. We also got the value of c from that, which is going to be 5 by 9. So b का value 2 by 9, c का value 5 by 9. So therefore 9 into b plus c का value कितना मिला यहाँ पे? अब देख सकते हैं यहाँ पे it is going to be 7. So I hope this question is clear for everyone out there. तो यार ये वाले क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में पूछा था एंड सी हाउ सिंपल द क्वेश्चन वाज. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है देन यू कुड हैव डन इट दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. ओके, सो चलो गाइस विद दैट let us wind up the session today. तो गाइस आज हमने डिस्कस किया है the concept of definite integration. We have not completed the entire chapter. As I told you यार ये बड़ा chapter है, ये एक ही session में complete करना, revise करना is not going to be possible. मतलब complete कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि complete नहीं होगा 1 hour के अंदर. Okay, we can do that. But I don't feel that it's going to clarify a lot of things for you. Okay, so that is why what I have done for you guys is that ये पूरा definite integration हमने 3 parts में divide कर लिया. So first part में हमने discuss किया definite integration by substitution method and also the properties. Properties में सारे properties हमने discuss नहीं किया. We have still the property number 7, property number 8 and the other special properties guys, जो हम डिस्कस करेंगे आज ही 9 o'clock के सेशन पे. ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रॉपर्टी नंबर्स 1 to 6
and also definite integral by substitution method. यार 9 बजे के सेशन में I want every one of you to join so that we are going to learn the other important properties of this chapter जिसमें questions आने का probability ज़्यादा है. Okay, so I hope this is clear for you everyone. The today's session, I mean all the concepts which we have discussed in this particular session. With that, guys, if anyone is still not a part of Telegram group, guys join कर लेना. Awesome group है, वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएगा लाइव क्लासेस का एंड ऑल्सो एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशंस भी आपको वहां पे मिल जाएगा. सो यू कैन ज्वाइन इट थ्रू दिस लिंक. और यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा है ना, यहाँ पे यार क्यूआर कोड को आप डायरेक्टली स्कैन कर लेना. From that also you can join. Okay, and also one more important thing. I know that all the students out there are enjoying our sessions. You know, they are very effective for you for the revision of your JEE examination. Okay, so guys, like the video, share karo yaar, subscribe karo to the channel. I've seen, I think, you know, out of all the students who are watching our videos, almost 40, in fact not only 40, I think 60% of the students have not subscribed yet. यार सब्सक्राइब कर लेना so that you don't miss out any video of ours, any live video, live session of ours. Okay, so chalo guys, that's it from today's session. Thank you so much everyone. Let us meet at 9 PM today. Okay, 9 PM और एक सेशन होगा जिसमें हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में भी, बट वहां पे हम दूसरे वाले प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो एनी डाउट, अगर आपका कोई भी डाउट है, you can ask me at 9 PM session also. So with that, thank you.